Gama dhamma mano setta manomaya manasace paduddhena bhasati va karoti va tato nang dukkhaman veti cakkang vahato padam Mano pubbang gamadhamma mano setta manomaya manasace pasannena bhasati va karoti va tato na There's no sound. Bandaji, there's no sound. hati Yocavanta kasavassa silesu susamahito upeto dhamma saccena save kasava marahati asare saramatino sare cha sara dasino te sarang nadhigachanti michha sankappa gochara arancha sarato nyatva asarancha sarato te sarang adhigachanti samma sankappa gochara යථාගාරං දුච්ඡං උට්ඨේ සමති විජ්ජති එවං අභාවිතං චිත්තං රාගෝ සමති විජ්ජති යථාගාරං සුච්ඡං උට්ඨේන සමති විජ්ජති
Evaṁ subhavitam cittam rāgona samati vijjhati. Idha sochati pecca sochati papakari ubhayatha sochati so sochati so vihanyati disva kamma kilitha mattano. Idha modati pecca modati kata puñño bhayatha modati so modati so pamodati disva kamma visuddha mattano. Idha tappati pecca tappati papakari bhayatha tappati papang me kathanti tappati bhiyo tappati duggating gato. Idha nandati pecca nandati kata puñño bhayatha nandati puññang me kathanti nandati bhiyo nandati suggating gato. Bahum piche sahitang bhasamano natakaro hoti naro pamato gopo gavo ganayang paresang nabhagava samanyassa hoti. Appang piche sahitang bhasamano dhammassa hoti anudhammachari ragam ca dosam ca pahaya moham sammappajano suimutta citto anupadiyano idhava hurangva sabhagava samanyassa hoti. Sadhu, sadhu, sadhu. Do you struggle with belly fat and nothing? Appamatta namiyanti ye pamatta yatamata etang visesato nyatva appamadam hi pandita appamade pamodanti hariyanam gochare rata. Tejhaino satatika niccang dalha parakkama husanti dhira nibbanam yogakhemang anuttaram uddhanavato satimato suchikam massa nisammakarino Sanyatasya dhamma jivino appamatasya yaso bhivadhati uddhanena pamadena sanyamena damena cha dipam kailatha medhavi yang mogho nabhikirati pamada manuyunjanti baladum medhino jana appamadam ca medhavi
Dhanang setthang rakkati. Ma pamada manuyunjetha. Ma kama rati santhavang. Appamatto hi jhayanto. Appoti vipulang sukhang. Pamadang appamadena. Yada nudati pandito. Panyapasad maruiha. Asoko sokhining pajang. Pabbatattho bhummadhe. Dhiro bale avekkati. Appamatto pamattesu. Suttesu bahujagaro. Abalasang asighaso. Hitva yati sumedhaso. Appamadena maghava. Devanang siddhatang gato. Appamadang pasamsanti. Pamado garhito sada. Appamadarato bhikkho. Pamade bhayadassiva. Sanyojanang anuntulang. Dahang aggiva gacchati. Appamadarato bhikkho. Pamade bhayadassiva. Abhabbo parihanaya. Nibbana-seva santike. Sadhu, sadhu, sadhu. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Welcome to today's lecture on fundamentals of Buddhism. Buddhism is both a religion and a philosophy. It is a way of life. And we have gathered here together to study the extraordinary life of the Buddha and his teachings. To begin with, may I invite Venerable Bhante Sumit to give us the 5 precepts. Thank you. Okay. Good morning to all of you. Suprabhatam and Namaste. Please keep your palms together close to your heart and say 3 times Sadhu, Sadhu, Sadhu. 3 बार नमस्कार पाठ कीजिए पंचशील ग्रहण के लिए. Please say Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 times to observe the 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Repeat after me. Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyang pe buddhang saranang gacchami. Yampi buddham saranam gacchami. Dutiyang pe dhammang saranang gacchami.
gacchami. Yampi Dhammam Saranam Gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Yampi Sangham Saranam Gacchami. Tateyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi Buddham Saranam Gacchami. Tateyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tateyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi Sangham Saranam Gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu miccāchārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu Miccāchāra Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Mukhavāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya majjapamādhatthāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapamādhatthāna Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vicaranena saddhiṃ pañcaṣīlaṃ dhammam sadhukam surakitam katva apamādena sampādetappam. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. I also would like to invite all of you to open your videos whenever you are ready. That way we will also be connected to each other more. And there is one student I can see, BFBCD 894. I think you have a difficulty in changing the name. If you go to the three dots over there, you actually can change the name, or we can change the name if you text your name here, or you can just tell us the name. I will change from this side. What's your name? Deepti Malki. Deepti Malki, right? Okay. All right. Thank you. Can you see now? Okay. Right. Over to you, Poonam. May I share Yes. screen, please, and begin explanation? Yes. Not clicking. Can you share? Don't. Yes. Screen, please, and begin. Not able to share nothing. Now can you? No, Bhante. Oh, let me see. Can you hear my voice? Yeah. Okay, it's working now, I think. Let's see.
It's a bit slow, I think. Let me see. Let me know if there is any difficulty. Just a moment. I'll have to close something. It's saying that internet is unstable. The internet is unstable from your side. Yes, just a moment. Now I'm able to share. I think it is starting to share. Okay. Here we go. Can you see my screen, Bhanteji? Yeah, Fundamentals of Buddhism? it's coming. Okay. It's coming, yes. Okay. Welcome to our course, Fundamentals of Buddhism. Today's topic is the Four Noble Truths. 2,500 years ago, in the deer park at Sarnath, India, close to the ancient city of Varanasi, was heard the message of the Buddha. And this message was to revolutionize the thoughts and life of the human race. In the beginning, this message was first heard by just 5 ascetics, but now it has penetrated peaceably to the remotest corners of the world, and the demand for better and deeper understanding of its meaning is great. There have been many expositions of the Buddha's teaching in several languages, and this course will give a comprehensive account of the central conception of Buddhism, the Four Noble Truths, with special emphasis on the Noble Eightfold Path, which is Buddhism in practice. It is named the Ancient Path, that is Purana Margam, the very words used by the Buddha in reference to the Eightfold Path. Just a moment, I have to move the controls and begin the slideshow. It's a bit slow. As I said, this is the central conception of Buddhism. So we are going to begin with an introduction to the Four Noble Truths. Chattari Arya Sachani in Pali. The contents of today's lecture are central conception of Buddhism, in which we will also introduce the 5 aggregates of clinging, Panchakhanda, and the Four Noble Truths. You see in the picture, we have a picture of the Buddha, the Supreme Buddha, sitting underneath the Bodhi tree, surrounded by 5 ascetics. The Four Noble Truths realized by the Buddha while seated in contemplation. He was lost in meditation and thought under the Bodhi tree at Gaya. These were made known by him to 5 ascetics when he gave his first sermon at the deer park at Kisipatan, which is modern Sarnath near Banaras. And this first sermon is the Dhammacakkappavattana Sutta. According to the Dhammacakka Sutta, this is the short form, light arose in me in things not heard before. This is when the Buddha realized the meaning of sorrow or dukkha in life and how to remove it. Just a moment, what has happened? I'll have to start sharing again. Something is wrong. Just a moment. The Buddha himself discovered by his own intuitive knowledge. This fourfold formula of the Four Noble Truths is the greatest achievement of the Supreme Buddha. It is said that he himself discovered it. Whether the Buddhas arise or not, because up till now there have been 28 Buddhas, these truths exist, and it is a Buddha that reveals them to the deluded earth. People think of various ways of getting rid of sorrow and suffering, but the Buddha has shown us a unique way of doing that. They do not and cannot change with time because they are eternal truths. The Buddha was not indebted to anyone for his realization of them. He himself said they were unheard of before. कहने का मतलब ये है कि ये जो चतारी आर्य सचानी है, ये भगवान बुद्ध ने स्वयं खोज की है, और इससे पहले कोई भी इस प्रकार नहीं सोचता. The Four Noble Truths are: suffering is universal. The origin of suffering is attachment.
the cessation of suffering is attainable. Path to the cessation of suffering is detachment. This is the central conception of Buddhism. The Buddha's teachings center around two basic principles. One is the Four Noble Truths, in which the Buddha diagnoses the problem of suffering. So he behaves like a doctor who is treating some malady or some disease. वो दुख और suffering को एक बीमारी समझते हैं, एक रोग, बहुत बड़ा कष्ट, और उसको दूर कैसे किया जाए इस विषय में उन्होंने सोचा था. And he indicates the treatment necessary to remedy this problem. And the other principle is the Noble Eightfold Path, the practical discipline he prescribes to uproot and eliminate the deep underlying causes of suffering. So the Four Noble Truths are the central foundation of Buddhism. Suffering is the unavoidable accompaniment of physical existence. All life is suffering. जब तक हमारा जीवन है तब तक suffering तो रहेगी. This is the first truth. Second truth, all suffering is caused by desire. हमारे मन में जो इच्छाएं रहती हैं, उसके कारण ये दुख उत्पन्न होते हैं. Three, all personal desire, all ambition must be extinguished by the person who wishes freedom from suffering, and it can all be extinguished by walking the path. तो इसका तरीका भी उन्होंने बताया है. Number 4, the path which leads to freedom from suffering is a narrow path. And the Buddha says, do not be self-confident about your spiritual progress unless you have reached to the very extinction of all desire. So the Four Noble Truths in Pali are Dukha Arya Satya, the noble truth of suffering, Dukha Samudaya Arya Satya, the arising or origin of Dukha, Dukha Nirodha Arya Satya, the cessation of Dukha, Dukha Nirodha Gamini Patipada Arya Satya, the way leading to the cessation of Dukha. तो पर्पस क्या है इन फोर नोबल ट्रूथ्स को समझने का, कि हम अपने जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनको समझें और उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढें. और ये रास्ता भगवान बुद्ध ने बताया है नोबल ट्रूथ नंबर 4 में, कि सफरिंग है और सफरिंग का कारण हमारी सेल्फिश डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती हैं, इस कारण हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं. तो अगर हम इन डिजायर्स को एंड कर दें तो हमारी सफरिंग भी एंड हो जाएगी. और इसको दूर करने का रास्ता है eightfold path, the middle way, and this will result in ending desire and attaining enlightenment. Enlightenment would set one on the path to achieving nirvana. This is a Sanskrit word. In Pali we say nirvana, and a return of the individual soul to the great oneness. अब ये कॉन्सेप्ट्स उस समय के थे. निर्वाण संस्कृत वर्ड है, सोल भी हिंदू या संस्कृत कॉन्सेप्ट है. तो इसके विषय में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. The Buddha was not interested in discussing unnecessary metaphysical questions, which are purely speculative and which create imaginary problems. इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है कि नहीं, देवी देवता है कि नहीं, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, ये सब मेटाफिजिकल बात है. तो भगवान बुद्ध को इनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. He considered them as a wilderness of opinions. It seems that there were some among his own disciples who did not appreciate this attitude of his. अब आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये वेनरेबल वॉलपोल की बुक है, What the Buddha Taught. These are one of the classic books of Buddhism. What the Buddha taught. For we have the example of one of them, जो उनके disciples थे, उनमें से एक थे मालूम के पुत्र बाइलिंग, who put to the Buddha 10 well-known questions on metaphysical problems and he demanded answers. He was very aggressive with the Buddha, and you can find details in the Chula Malum ke Sutta, number 63 of MN. MN short form है मध्यम निकाय का. The Buddha explains to Malum ke Buddha that the holy life does not depend on these things. हर कोई अपने जीवन में अच्छा जीवन चाहता है, खुशियां चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, और एक होली और सेक्रेट और रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं. तो उसके जीने का क्या तरीका है? तो बुद्धा ने मालूम के बुद्ध को एक्सप्लेन किया कि ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
Whatever opinion one may have about problems like is the universe eternal, there is birth, decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief, distress, ये सब तो जीवन में ही रहेगा. The cessation of which, that is nirvana. That is why I have not told you about it. Therefore, Malum Kipur, bear in mind what I have explained as explained and what I have not explained as not explained. जानने योग्य जो भी बातें हैं केवल वही सुप्रीम बुद्धा ने अपने पाली कैनन में बताई, अपने सुधास में बताई है. बाकी सब बातों को वो व्यर्थ मानते हैं. Then what, Malum Kipur, have I explained? I have explained dukkha, the arising of dukkha, the cessation of dukkha, and the way leading to the cessation of dukkha. Why, Malum Kipur, have I explained them? Because it is useful. It is fundamentally connected with the spiritual holy life. It is conducive to aversion, detachment, cessation, tranquility, deep penetration, full realization, nirvana. जीवन को जीने के लिए हमें पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है. तो बुद्धा इज यूनिक इन दिस. वो मानते नहीं थे कि कोई देवी देवता है जिनकी हमें पूजा आराधना करनी होगी और वो प्रकट होंगे और हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर देंगे. ऐसी धारणा वो नहीं रखते. जो बुरी बातें हैं उनसे अवर्जन होना चाहिए. बहुत ज्यादा मोह माया राग में नहीं पड़ना चाहिए. डिटैचमेंट होनी चाहिए. दुखों और जो हमारी बुराइयां हैं, जो डिफाइलमेंट्स हैं, क्लेश हैं, उनकी सेसेशन होनी चाहिए. इस तरीके से हमारा चित्त शांत बन जाएगा, ट्रैंक्विलिटी आएगी. हम जीवन की समस्याओं को डीपली पेनिट्रेट करके समझ सकते हैं और इस तरीके से दुख से छुटकारा पा सकते हैं, निब्बान मिल सकता है. Let us now examine the four noble truths which the Buddha told Malum Kipur he had explained in the suttas, that is. Four noble truths, as we have seen, are dukkha, samudaya, that is arising, nirodha, that is cessation, and magga, that is the path. इनको दूर कैसे किया जाए? So the Chatari Arya Sanchar dukkha, all forms of existence are unsatisfactory and subject to suffering. जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम समाज में हैं, तब तक कुछ ना कुछ तो होगा ही हमारे एग्जिस्टेंस में जिससे हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड और संतुष्ट नहीं होंगे और उसके कारण हमें दुख होगा. Samudaya, all suffering and all rebirth is produced by craving tanha. हम चाहते हैं कि जीवन में जीते रहें. हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए. अब हम कुछ नए तरीके का बनना चाहते हैं. इसी कारण हमें परेशानियां और दुख होते हैं. Nirodha, the extinction of craving results in the extinction of rebirth and suffering. That is nibbana. तो इस सबसे छुटकारा कैसे मिले? उसको उन्होंने निब्बान कहा. निब्बान is a Sanskrit word, but nibbana is a Pali word. और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया है, magga, the eightfold path by which nibbana is attained. The first noble truth means to live means to suffer. तो अगर हमारे पास जीवन है, अगर हम जी रहे हैं, तो सफरिंग तो होगी ही होगी. तो ये पहला एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ माइंड. दिस इज द बुद्धिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स माइंड, टुवर्ड्स लाइफ. कि हमारे माइंड में ये बात हमेशा रहना चाहिए कि सफरिंग तो होगी ही होगी. थेरावाद बुद्धिज्म के ही कंसेप्शंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे. The foundations of Buddhism are the four noble truths, namely suffering, the raison d'être, that means the reason for being of Buddhism. Buddhism की शुरुआत कैसे हुई? भगवान प्रिंस सिद्धार्थ उस समय थे. उन्होंने अपने जीवन में 4 ग्रेट साइड्स देखे: सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ और रिनाउंसिएशन. हालांकि उनके पिता महाराज शुद्धोदन ने बहुत कोशिश की थी कि वो महल के आयशो आराम से बाहर ना निकले और उन्हें कुछ पता ना चले कि जीवन में क्या रहा होगा. लेकिन फिर भी ये 4 ग्रेट साइड्स ऑफ बुद्धिज्म उन्होंने देखी और उसके बाद वो सोचने लगे कि इतनी सब सफरिंग को हम कैसे बर्दाश्त करें. इसको समझने की आवश्यकता है. और उनमें कंपैशन, करुणा इतनी अधिक थी कि ये जो उन्होंने सीखा, जो समझा, वो उन्होंने दूसरों को भी सिखाया है. Its cause, that is craving, its end, that is nibbana. This is the summum bonum of Buddhism. Summum bonum means the ultimate achievement, what we want, and the middle way. इसको आगे हम देखते हैं.
The Buddha is like the last physician. ये एक डॉक्टर की तरह है. He is the wise and scientific doctor for the ills of the world. इसलिए इनको भिसक या भेषज गुरु भी कहते हैं. इसलिए अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो अगर टिबेटन बुद्धिज्म की, तो आप देखिए मेडिसिन बुद्धा मंत्र की धारणी भी उपलब्ध है, इसकी पूजन विधि भी उपलब्ध है यूट्यूब में. In addition to the ordinary meaning of suffering, the word dukkha also includes deeper ideas such as imperfection, impermanence, emptiness, insubstantiality. दुख एक जनरल वर्ड है. हमें लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं लगती है, पूरी नहीं लगती, आज है कल नहीं है. जीवन में चंचलता तो बनी रहती है, इसलिए भी हमें दुख होता है. The Buddha does not deny happiness in life when he says there is suffering. वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं है. On the contrary, इसके विपरीत, he admits different forms of happiness, both material and spiritual, for laymen as well as monks. Monks से है भिक्षु संघ और laymen में हम और आप, उपासक और उपासिका आदि. तो ये मानना गलत है कि बुद्धिज्म एक नेगेटिव या पेसिमिस्टिक रिलीजन है. बिल्कुल इसके विपरीत, खुशहाली, हैप्पीनेस के विषय में उन्होंने बहुत कुछ कहा है अपने सूत्रों में. In the Anguttara Nikaya, one of the 5 original collections in Pali containing the Buddha's discourses, there is a list of happiness. Multiple, बहुवचन है, सुखानी. अब किन किन हैप्पीनेसेस या खुशियों के विषय में भगवान बुद्ध ने बताया है, such as the happiness of family life and the happiness of the life of a recluse. Recluse मतलब वो जो संन्यास ले ले, जीवन के झंझटों से संन्यास लेके अलग नहीं, जैसे कि हमारा नोबल भिक्षु संघ रहता है. The happiness of sense pleasure, मिडिल वे की बात करते हैं भगवान. वो ये नहीं कहते कि अच्छी चीजों को खाना छोड़ दें या सिर्फ बुरी जो भी मिल जाए वो रूखा सीखा वो भी खा लें या कुछ भी उल्टे सीधे कपड़े पहने, ऐसी बात नहीं है. वो सिर्फ मिडिल वे की बात करते हैं. And the happiness of renunciation, हमारा एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जब भी स्थिति ऐसी हो, विपरीत हो, तो हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए. The happiness of attachment, फैमिली ड्यूटीज की बात करती हैं, संघ के प्रति ड्यूटीज की बात करते हैं, तो नेचुरली ये तो अटैचमेंट से ही आती है. एंड द हैप्पीनेस ऑफ डिटैचमेंट, जब हम कुछ और बुरी चीजों से डिटैच हो जाते हैं तो वो भी सुखकारी है. फिजिकल हैप्पीनेस एंड मेंटल हैप्पीनेस आल्सो. द बुद्धा सेड दैट व्हाटएवर इज इम्परमानेंट इज दुख. यद अनित्य, जो भी अनित्य है, इम्परमानेंट है, तम दुख, वही दुख का कारण है, वही सफरिंग का कारण है. क्या है? According to Buddhists, life is full of suffering. It is part of the system. There are 3 main types of suffering universal to the human condition. 1. Ordinary suffering. 2. Suffering because of change. 3. Suffering due to conditioned existence. Conditioned का मतलब होता है कुछ conditions पर निर्भर करना. अब जैसे एक बच्चा माता पिता से आग्रह करता है, बाल हट करता है कि मुझे आइसक्रीम खिला दो. अब ठंड का मौसम, माँ बाप उसको समझाएंगे या नहीं देंगे, तो बच्चा तो हट करता जाएगा. तो बच्चे की खुशी इस कंडीशन पर डिपेंड करती है कि माँ बाप उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते. बिल्कुल छोटी सी चीज है आइसक्रीम खाना, पेरेंट्स अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये कुछ और कंडीशंस पे डिपेंड करता है. तो बुद्धिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू लाइफ. बहुत डीप पेनिट्रेटिव स्टडी की गई है और कंप्लीट स्टडी की गई है. What is the human condition? The conception of dukkha may be viewed from 3 aspects. Dukkha as ordinary suffering, which is called dukkha dukkha. 2. Dukkha as produced by change, viparinana dukkha. And dukkha as conditioned states, sankhara dukkha. जैसा कि हमने इन ओरिएंटेशन सेशन में आपको बताया था, दिस इज एन एकेडमिक और स्कॉलरली अप्रोच टू स्टडीइंग बुद्धिज्म आल्सो. तो इस कोर्स के बाद या साथ साथ अगर आप दूसरे कोर्सेज की वीडियोस देखेंगे या धर्म गुरुओं के डिस्कोर्सेस सुनेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने वही वोकैबुलरी प्रयोग की है. All kinds of suffering in life, like birth, old age, sickness, death, association with unpleasant persons and conditions, separation from beloved ones and pleasant conditions, not getting what one desires, grief, lamentation, distress.
All such forms of physical and mental suffering, which are universally accepted as suffering or pain, are included in dukkha as ordinary suffering. ये आम जीवन की परेशानियां हैं, छोटे छोटे दुख है जो हमारे मन को चोट पहुंचाते हैं, तो इनको हम कहते हैं दुख दुख. A happy feeling, a happy condition in life is not permanent, not everlasting. सुख और लक्ष्मी ये दोनों चंचल माने जाते हैं, अधिक देर तक नहीं रहते. It changes sooner or later. When it changes, it produces pain, suffering, unhappiness. This vicissitude, ये जो परेशानी है, जो खराब situation है, it is included in dukkha as suffering produced by change. But the third form of dukkha as conditioned states, sankhara dukkha. अगर आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी तो आप देखेंगे संखार में m और n दोनों प्रयोग किया जाता है. This is the most important philosophical aspect of the first noble truth, and it requires some analytical explanation. क्योंकि हम कह रहे हैं कि conditioned states के ऊपर हमारा सुख या दुख डिपेंड करता है. तो हम क्या है? We think of ourselves as being, as an individual, or as I. I am a person. Now, what is the view of Buddhist philosophy? ये being or I, it is only a combination of ever-changing physical and mental forces or energies, जिनको हम 5 groups या aggregates पंचखंड में डिवाइड करते हैं. कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन फिलॉसफी में माना जाता है कि एक सोल, एक आत्मा है. वो आत्मा लाइफ गिविंग सब्सटेंस है, फोर्स है. वो जब शरीर के अंदर जाती है तो जीवन आता है. लेकिन बुद्धिज्म में ये मानते हैं कि ऐसी कोई एक यूनिटी नहीं है. 5 एग्रीगेट्स है, पंचकर्म है, और एक इनको क्लिंगिंग एग्रीगेट्स भी कहते हैं, या एग्रीगेट्स ऑफ क्लिंगिंग. और क्योंकि ये क्लिंग करते हैं, चिपकते हैं, अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए ये चेंज भी होते हैं लेकिन फिर भी एक साथ बने रहते हैं. और ये जब शरीर के अंदर के फिजिकल बॉडी, फ्लैश, ब्लड वगैरह की बॉडी के अंदर जब होते हैं तब जीवन होता है. The Buddha says, in short, these 5 aggregates of attachment or clinging are. तो जब तक ये 5 खंड हैं हमारे अंदर, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक 5 खंड है, जब तक 5 खंड है तब तक हम सांस ले रहे हैं, तो तब तक दुख रहेगा ही रहेगा. संकितेन by brevity, by being brief, संक्षिप्त में पंच उपादान खंडा, ये जो 5 खंड है जब ये उत्पन्न होते हैं, जब ये अराइज करते हैं दुख, तब ये दुख देते हैं. What are these 5 aggregates of clinging? Material form, feelings, perceptions, mental formations, consciousness. The first is the aggregate of matter, Rupa Khanda. In this term, aggregate of matter are included the 4 great elements, Chattari Mahabhutana, namely solidity. जैसे हमारा शरीर solid है, अगर हम अपने सिर पे, हेड के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो solid है. Fluidity, हमारे अंदर जो ब्लड है, जो वाटर है, वो फ्लूइड है. और जो पानी भी होता है उसका स्वभाव है, इंट्रिंसिक नेचर है कि वो फ्लो करता है. हीट, हमारे बॉडी के अंदर हीट है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. और विंड या मोशन, जैसे हम अपने आप को सपोर्ट करते हैं या पुश करते हैं तो ये विंड या मोशन है. ऑल्सो द डेरिवेटिव्स, उपादाय रूपा, इससे अनेक और रूप भी बनते हैं ऑफ द 4 ग्रेट एलिमेंट्स. तो ये अनेक प्रकार के जो रूप खंड है, जो मटेरियल फॉर्म है, जो मैटर है, ये है पहला एग्रीगेट. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, ये लैंग्वेज डिलिबरेटली सिलेक्ट की गई है जिससे कि आप जब बुद्धिज्म की बुक्स पढ़ेंगे और डिस्कोर्सेस सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा what venerables are talking about. So the 5 aggregates are a self-generating entity. जब जीवन होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो अपने आप ये 5 aggregates बनते हैं. अब देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड है. And this is why Buddhism is considered an intellectual approach to life. तो डियर धम्म ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको पहले या दूसरे लेक्चर में ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरीथिंग इन स्टडी ऑफ बुद्धिज्म इज इंटरकनेक्टेड. सिर्फ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पटे जो समुपाधि इंटरकनेक्टेड नहीं है, बाकी सब भी है. जैसे
4 noble truths है, वह first noble truth है, फिर उसकी step by step, level by level more difficult explanations और definitions है. अब देखिए 5 aggregates का ये diagram, इसमें सब interconnected है. Mental formations form the 6 senses. Consciousness जो awareness है हमारी, perception जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या उसको सुनते हैं या अपने सेंस ऑर्गन से उसकी अवेयरनेस होती है तो हम उसको समझते हैं, उसे जानते हैं. और जो हमारी फीलिंग्स है, वेदना, और हमारे माइंड में जो फॉर्मेशंस आती हैं, जो थॉट्स आती हैं कि क्या करें क्या ना करें. The second is the aggregate of sensations or feelings, इसको कहते हैं वेदना खंड. In this group are included all our sensations, pleasant or unpleasant or neutral. ये 3 तरह की होती है. Experience through the contact of physical and mental organs with the external world. अब जैसे हमारी 5 sense organs है, जैसे eyes है, nose है, tongue है taste के लिए. हम कोई खाना खाते हैं वो हमें pleasant भी लग सकता है, unpleasant भी लग सकता है और neutral भी लग सकता है. So skandha are the 5 aggregates in Buddhist philosophy: form or matter, sensation or feeling. अब ये और feeling और further elaboration है perception, जिसको हम conception, appreciation, cognition और discrimination भी कहते हैं. Consciousness और mental formations जिसे हम volition और compositional factors भी कहते हैं. The third is the aggregate of perceptions, sanya khand. साइकोलॉजी में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में परसेप्शन का जो मीनिंग है, सेम मीनिंग बुद्धिज्म में भी है. Like sensations, perceptions also are of 6 kinds in relation to 6 internal faculties and the corresponding 6 external objects. जैसे eye faculty है, ये हमारी बॉडी के अंदर है, तो ये इंटरनल फैकल्टी है. अब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आईज के सामने आता है तो हमारी आई को अफेक्ट करता है, impinges upon our eye sensitivity. So that is the external corresponding object. It is the perceptions that recognize objects, whether physical or mental. तो physical object तो वो वस्तुएं हैं, वो things हैं जो हमें जो हमारी sense organs को affect करती है, और mental हमारे thought processes हैं. The fourth is the aggregate of mental formations, sankhara khanda. In this group we include all volitional activities. जो वॉल्यूशन, अपनी चेतना, अपनी इच्छा से हम करते हैं, whether they are good or bad, तो जिसको हम कर्म या कम कहते हैं. Again, कर्म is a Sanskrit word and कर्म is Pali, so comes under this group. The Buddha's own definition of karma. Now, the theory of karma of Buddhism is world famous. This is one of the chief reasons why non-Buddhists study this, and it should be remembered here. So, the Buddha himself has said, "O bhikkhus, it is volition, chetana, that I call karma. Having built, one acts through body, speech, and mind." अगर हमारी intention, हमारी चेतना किसी अच्छे काम को करने की है, तो मान लिया जाता है कि हमने कुशल कर्म किया, हमने पुण्य किया. और अगर हमारी intention खराब है और देखने वाले को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बुरा कर्म ही माना जाता है. Volition is mental construction or mental act, जिसको हम नियत भी कह सकते हैं. हमारी अंदर से intention क्या है? Its function is to direct the mind in the sphere of good, bad or neutral activities. It is only volitional actions, जैसे कि attention है, जिसको मनसिकारा कहते हैं, that can produce karmic results. There are 52 such mental activities which constitute the aggregate of mental formations. तो ये अभिधम्म में स्टडी किया जाता है. The fifth aggregate is the aggregate of consciousness. This is called vinyana khanda. Consciousness एक reaction या response है जिसमें 6 faculties involved होती हैं. Eye, ear, nose, tongue, body and mind. ये basis है विज्ञान का. And one of the 6 corresponding external phenomena. जैसे eye के लिए visible form, ear के लिए sound, nose के लिए odor, odor means smell, tongue के लिए taste, body के लिए tangible thing, जैसे अगर कोई स्पर्श हो, कोई टच हो, तो हम कोई फंस या कांटेक्ट हो तो हम उसको फील करते हैं. और माइंड के लिए माइंड ऑब्जेक्ट्स. माइंड ऑब्जेक्ट्स में आता है आइडिया या थॉट. The 5 aggregates panchakhanda according to the Pali canon. So we have form, that is rupa, इसमें 4 elements,
महाभूत आते हैं, इसका कॉन्टैक्ट या फंस होता है कॉन्शियसनेस या विज्ञान से। फॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोर ग्रेट एलिमेंट्स। हमारा शरीर जो है या कोई भी और हार्ड वस्तु, कोई भी और ऑब्जेक्ट या वस्तु है, तो वो इन एलिमेंट से बनती है। कॉन्शियसनेस दूसरे एग्रीगेट से बनती है। मेंटल फैक्टर्स बनते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अदर एग्रीगेट से। और मेंटल फैक्टर्स को हम कहते हैं चेतसिका, जैसे फीलिंग है, वेदना है, परसेप्शन या संज्ञा है, फॉर्मेशन है, संखारा है। अब इस फोर नोबल ट्रूथ्स के डिस्कशन में तो इन फैक्टर्स के विषय में इतना ही स्टडी करेंगे, क्योंकि ये अभिधम्म में आता है। Human being is made up of 5 aggregates. This is something that we have to understand. Vinyana, Sanya, Vedana, Sankhara, Rupa, that is the body form. So suffering is extinguished by relinquishing attachment to aggregates. अब इसमें एक वर्ड का यूसेज नोट कीजिए, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझाना जैसे। तो ये जो क्रेविंग है, ये जो डिजायर्स हैं, ये भी एक आग, एक फायर, एक हीट की तरह है। और इसको जब हम बुझा देते हैं, जब हम लाइफ में बिल्कुल कूल, काम, समझदारी, अक्लमंदी से काम करते हैं, पेनिट्रेशन से जीते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें निब्बान मिलता है। निब्बान हियर एंड नाउ, जीवन में ही हमें निब्बान मिलता है। और दूसरा निब्बान तो ये है कि जब रिबर्थ नहीं होता। तो एक तो है रूपा, हमारी बॉडी फॉर्म, और दूसरा है माइंड, जिसको कहते हैं नाम। हमारे माइंड में क्या चल रहा है। I think Bhante, I would like to stop here because we have to do meditation and then we have to do Sutta study also. May I stop here, Bhante ji? Sure. Okay. So, what sutta studies do we have apart from this? Bhante ji, first of all, we would like to do meditation. So please guide us. Metta Bhavana और Anapanasati one more time so that we know it well. एक बार हम लोग और कर लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जो भी आप सुत्ता बताना चाहिए वो हम वंदना, हमने अभी तक एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं सुनी आपसे। So please give us Dhamma Desna। और मैं आप सभी लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आपका कोई सवाल है तो पूछ लेना। और बाकी साइलेंट बैठने से अच्छा है, आप लोग को कुछ ज्ञान मिलेगा। फिर भी आप लोग कुछ सवाल भी पूछना चाहिए, तब भी आपका जो भी है वो ये अंदर से आपका कुछ ना कुछ सवाल होगा। अगर आप वर्बल नहीं पूछना चाहे तो अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में और यूट्यूब में हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। You all are welcome to ask any question because that way we will be interconnected, right? Okay, so yes, thank you everyone for joining us, and thank you, Sister Poonam Sood, for teaching today, and I hope everyone enjoyed your teaching. And Deepti Malki Rajkumar Ambade and Sangamita Chavan is another teacher here. Amita Sharma, Abhishek Giridharan, Sheetal Shakya, and Subhash Chandra Patra, and Litun Chanda, Savita Ramteke, Sneharata Mohapatra, Sandeep Patra, Anchal Singh, and Rahul Pawar. And I think in we also have some students, Prashil Meshram, joining in from YouTube. Okay, so welcome to all of you. Now let us practice a little bit of meditation. Let us keep ourselves, straighten our body, and settle on your seats. So we will go for a 10 minutes meditation, okay? Just 10 minutes. Okay.
Please settle on your seats, sit comfortably, and then straighten your back and head. Close your eyes gently and compassionately, and keep one palm on the other. Relax your eyebrows, relax your shoulders, relax your entire body, relax your mind. Let us take a good long deep breath and hold it for a few seconds, and then slowly release and relax. Let's do it together. Take a good long deep breath. Hold it for a few seconds, and then slowly release and relax. One more time. Take a good long deep breath. Hold it for a few seconds, and then slowly release and relax. Now let us pay more attention to our breathing process. Breathing in and breathing out. I want you to pay attention to the nostril and the upper lip. When we breathe in, the incoming air touches the nostril before entering the body. That is our entry point. And when we breathe out, the outgoing air touches the upper lip before leaving the body. So that is our exit point. Our mindfulness is like a gatekeeper watching all the incoming and outgoing breaths. And we will see the breaths in detail. Sometimes the breaths can be longer, sometimes they can be shorter. We recognize them, we identify them. We do not control. Let them happen on their own, and let them take their own pace. And see for yourself how your body and mind become calm and tranquil and peaceful in the process. Breathe in and breathe out and recognize all of them. Feel how you sense when you breathe in. How do you feel in your nose when you breathe in? Nostril before entering the body. When the incoming air touches the nostril, how do you feel it? When the outgoing air touches the upper lip before leaving the body, how do you feel it? It's a continuous research.
Every single breath is unique. They have their own unique identity. Let us try to explore more about these breaths. Feel free and happy and peaceful and freedom. When you breathe in the good energy, the positive energy, the oxygen coming in. When we breathe out the negative energy, the carbon dioxide is going out. So we should feel much more better. This is the natural cleansing process that we all do. But when we pay attention to that as a meditation, we also can purify our mind. We can cleanse our mind. So that is the huge advantage when we pay attention to breathing. By practicing with closed eyes, you might also hear some sounds, background sounds. That is again perfectly all right. We have one more minute. Let us absorb the best of this meditation while practicing in silence. Now let us take a good long deep breath and hold it for a few seconds and then slowly release and relax. And with closed eyes, let us keep our palms together close to our heart and say 3 times, Sadhu, Sadhu.
Sadhu. Now let us rub our palms with closed eyes again, and then pay attention to the movements of the palms and also the sensation. When you feel the warmth in your palms, you can place them on your eyes with a good long deep breath. And then release and relax. Now let us keep our palms together. And again, let us open our eyes with a more positive energy, peace and happiness, and looking at the brighter side of the world. All right. Thank you. Okay. Sandipita, would you like to say something? Yes. So, any question? So far, so good? Okay, Abhishek Giridharan has a question. Namo Buddhaya Vandami Bhanteji. Today I would like to ask a very basic query on the first of the five precepts, that is abstain from killing. We have a major problem of roaches in our kitchen and home. It's not hygiene, as they cause diseases. So is keeping some cockroach repellent violating the precept? Good question. Because I think in India you also have mouse everywhere, the mice. So people also respect the mice as a vehicle of Lord Ganesh. Yes. And so in a way, they kind of respect that animal. and and also you respect so much the cow. It's like a holy animal. Yeah, in a way, you are actually grateful and thankful to a wonderful animal who helps in all throughout our daily activities, human activities. It's kind of really good thing. And we as Buddhists, we also pay respect to the Bodhi tree. So we really have a great respect to the Bodhi tree. In a way, we pay respect to the nature. We conserve the nature, we preserve the nature. And all the other things, like at home, we can have ants, we can have bugs, mosquitoes, and cockroach, and so many other the insects, and all these things can be there. But then again, um, because the world belongs to them as well, we have no moral right to say the whole world belongs to us. The other animals are also very important, like let's say snakes. People are scared of them, but sometimes human beings are more venomous than snakes. Right? So we have no right to pass moral judgments, right? So it's really important that we keep our homes clear, in order to have the hygiene part.
everyone sing individually and also as a community. If you stay in an apartment building where like stories, multi-story, it's really important that we all keep everything clear and clean so that we don't allow conditions for them to grow. And it's really important. And we keep our surrounding clean and clear. And remember, this cockroach, it's very difficult to eliminate. Even the even the atomic bomb couldn't eliminate them in Japan. When Hiroshima and Nagasaki were bombarded, Yes. the atomic bomb was dropped there, and they still survived. So it's not possible. They are also very strong. They can survive. They can easily adjust to any situation, even under extreme hot, cold. They still can survive. So um, let us not um, pay so much attention to that, but rather we keep our homes clean, and so that we will not kill them intentionally, but we will not allow any additional conditions for them to grow. I think that is the best advice we can give. Thank you for your concern, and it's a very, very important practice that we practice loving kindness, and we practice metta to all sentient beings, not only to human beings. Yes, as a young man, you are concerned about all the animals. I think it's a really good thing. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Bhantaji, for guiding us in meditation. It is time to close the program. May I request Bhantaji to make aspiration and do transfer of minutes. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you everyone for joining us, and we would like to invoke blessings upon all of you by the power of the Buddha Dhamma Sangha. May you all be well, happy, healthy, and safe. May your near and dear ones, family members, friends, and relatives, teachers, and elders all be well, happy, healthy. May you all be blessed by the Noble Triple Gem. May all of us and may all of them and everyone in your community, in your country, and especially everyone in the world. We want to really like to pray for all those people who are suffering from COVID-19, and also their affected family members. We would like to invoke blessings upon all of them. May they all be blessed by the Noble Triple Gem. May they all be blessed by all heavenly beings and all the Kalyana Mitta friends. May all of us and may all of them be well, happy, healthy, safe. May no harm come to you or them from water, air, fire. And may you always, everywhere, be protected and safe. And may all our departed ones also share this merit, receive this merit, be well, happy, healthy, safe, wherever they are. May all sentient beings, all of us, all the departed ones, be able to attain the absolute peace and happiness, the supreme bliss of Nibbana. Thinking thus, let us keep our palms together close to our heart and say, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Sammitiyo vivajjantu sabbarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhe digayuko bhava bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu te.
Bhavatu Sabbha Mangalang Rakhantu Sabbha Devata Sabbha Sanghanubhavena Sada Sotti Bhavantu Te. Sadhu, sadhu, sadhu. Please join us in our Sutta discussion series today, California time, evening 6 p.m. And tomorrow we have 2 Pali classes. And on every Wednesday we also have Tripitaka translation project. You're welcome to join. Thank you. Thank you very much, meritorious brothers and sisters in Dhamma. Good night. May Lord Buddha keep you. And we shall meet again next week. Have a good night. We are closing the meeting now.